Hi friends, this is Dr. Krup Vasavda and our today's topic of discussion is structure of firearm. If you are new to this channel, consider subscribing and sharing. And if you want more updates regarding forensic medicine and toxicology, you can visit the description box. There I have given all the links, right? So let us start today's topic. It is very important. Structure of firearm. So generally it is composed of बैरल, ग्रीप एंड एक्शन. सो यहाँ पे तीन चीज होती है. एक जो है वो बैरल होता है, दूसरा है ग्रीप एंड द थर्ड पार्ट इज एक्शन. सो लेट अस सी व्हाट इज बैरल और व्हाट इज ग्रीप फर्स्ट. सो ग्रीप, this is the rare part of the firearm and is held either in the hand or can be supported by the shoulder, right? So अगर वो पिस्तौल है, अगर वो रिवॉल्वर है, then held either in the hand, and if it is military rifle then can be supported by the shoulder, जैसे कि हमने पिक्चर में दिखाया हुआ है. देन बैरल. सो ये जो बैरल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बैरल इज hollow steel tube or cylinder and the length varies according to type of gun. जैसे जैसे टाइप ऑफ गन अगर वेरी होगी तो उसकी लेंथ जो है वो वेरी होगी. सो यहाँ पे ये जो है वो बैरल है. हमने जो ब्लू एरो है उसे दिखाया हुआ है. एंड द ल्यूमेन, जो इनर ल्यूमेन है ऑफ अ ट्यूब और सिलेंडर इज नोन एज बोर. द फ्रंट एंड ऑफ द ट्यूब, ये जो फ्रंट एंड है, इज नोन एज मसल एंड. एंड द पोस्टीरियर रेयर एंड is known as breech end, right? So the front end is known as muzzle end and the posterior or rear end is known as breech end. Chamber. Chamber is the posterior most part of the barrel and is wider than the rest of the tube. So chamber जो है वो posterior part है. यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको. So this is the chamber part. Chamber accommodates cartridge, right? यहाँ पे ये यही बताया गया है. Accommodates or houses the cartridge to be fired, and the backside of the chamber has a metal plate called a breech plate. So ये जो है वो breech plate है and it has a central hole, right? The front part of a chamber tapers. So जो front part of chamber होती है वो फिर tapering होती है, and this part is known as taper or lead, यानी कि taper of the chamber, right? And then the lead then continues anteriorly with the बैरल, राइट? ये जो है वो बैरल के साथ फिर कंटिन्यू हो जाती है. नाउ एक्शन. द थर्ड पार्ट इज एक्शन. इट कंसिस्ट ऑफ ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, बोल्ट एंड स्ट्राइकर और हैमर, राइट? सो यहाँ पे 4 पार्ट्स होते हैं जो कि ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, बोल्ट एंड स्ट्राइकर और हैमर. सो द फर्स्ट वन इज ट्रिगर. द लोअर पार्ट ऑफ द फायर आर्म, राइट, हैज अ ट्रिगर. When the trigger is pulled, the striker or hammer strikes the posterior part of the cartridge, ejecting the bullet pellet from the muzzle end of the barrel, right? So जो ट्रिगर है वो जब पुल किया जाता है तब जो गोली है वो बाहर निकलती है. उसका मैकेनिज्म हम आगे देखेंगे. ट्रिगर गार्ड, इट इज अ मेटालिक रिम, राइट? वो एक मेटालिक रिम है एंड द ट्रिगर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायरिंग, जो कि उसके सराउंडिंग होती है और वो एक्सीडेंटल फायरिंग को वहां पे उसको प्रिवेंट करती है. द थर्ड वन इज बोल्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लॉक, एंड इज प्रेजेंट टूवर्ड्स ब्रीच एंड ऑफ बैरल. वो जो ब्रीच एंड है उसके पास, बैरल के पास होती है. एंड द पार्ट दैट इनकॉर्पोरेट्स द फायरिंग पिन, स्प्रिंग एंड ट्रिगर इज कॉल्ड बोल्ट, या राइट, जो कि इनकॉर्पोरेट करता है किन किन पार्ट को? फायरिंग पिन, स्प्रिंग एंड ट्रिगर. And then striker or hammer. At the posterior part of the chamber there is a hammer without pointed pin and a spring, right? So hammer जो है वो भी यहाँ पे दिखाई गई है. ये जो है एक pointed pin के साथ और spring के साथ यहाँ पे hammer होती है. Mechanism, let us see mechanism. When the trigger is pulled, जब ट्रिगर को खींचा जाता है, the spring action causes the hammer to move and advance or protrude the firing pin to the chamber from the central hole, right? अब जो सेंट्रल होल होता है वहां से यहाँ पे हमने दिखाया है कि जो हैमर है वो किसको स्ट्राइक करेगी? कार्ट्रिज को. एज द फायरिंग पिन मूव्स फॉरवर्ड एंड इट स्ट्राइक द बेस ऑफ
कार्ट्रेज, राइट, फ्रॉम सेंट्रल होल जो है वो कार्ट्रेज को स्ट्राइक करेगी. द स्ट्राइकिंग द फायरिंग पिन ओवर द कार्ट्रेज प्रोड्यूसेस हिट एंड इग्नाइट्स द प्राइमर, राइट. जैसे वो स्ट्राइक करेगी, जैसे वो हिट करेगी, देन उसका जो प्राइमर है वो इग्नाइट हो जाएगा, बंद हो जाएगा. एंड द एक्शन ऑफ द पिन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ मैच स्टिक. सो मैच स्टिक जैसे हम रब करते हैं और मैच बॉक्स जैसे इग्नाइट होता है, वैसे ये जो प्राइमर है वो भी इग्नाइट हो जाएगा और गैसिस फॉर्मेशन होगा. एंड देन जो गोली है उसको धक्का लगेगा एंड वो मजल एंड से बाहर निकलेगी, राइट. Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon and share this video amongst your friends. Thank you.